Hello students, welcome all of you. In last lecture, we have studied the three equations of motion. That is, the first equation is V is equal to U plus AT, where V is the final velocity of object which is in motion, U is the initial velocity, A is the acceleration in that object, and T is the time after which we have to find out the motion. इक्वेशन फर्स्ट हम कब यूज करने वाले हैं? अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मोशन में एंड हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है. नाउ इफ दैट ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेशन, दैट इज इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एंड आफ्टर सम टाइम, अब उसमें जो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाले वही वो भी पता है हमें. आफ्टर सम टाइम वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी v. We knows initial velocity of that object, we knows the acceleration in that object, and we knows the time after which we have to find out the final velocity. In that case, we can use the first equation of motion. Then we have studied the second equation of motion, that is S is equal to ut plus 1/2 at square, where S is the displacement or distance covered by that object during the motion. U is the initial velocity, T is the time, A is the acceleration, and T is the time. This second equation gives the relation between distance covered by that object, initial velocity of that object, acceleration and time. And we have studied the third equation of motion, that is V square is equal to U square plus 2 times AS. Now again this equation gives the final velocity of object when we know the initial velocity of object, acceleration in that object, and the distance covered by that object. Now the difference between first equation and third equation is that both this equation gives the final velocity, but in first equation we know the initial velocity, acceleration and time, whereas in third equation we know the initial velocity, acceleration and distance covered by that object. Therefore we have studied all these equations. Now in next lecture we are going to solve the problems on these equations. Before that we are going to start the next topic, that is graphical representation of motion of object. During the motion of object there are 4 important parameters of that moving object: its distance covered by that object, its velocity, its acceleration, and the time required to cover the distance. Now we are going to study the first graph, that is distance time graph. Distance time graph. Now in distance time graph we have to represent the distance covered by that object with respect to time on the graph paper. For that, now we have to consider the x and y coordinates of the graph. This is the x coordinate and this is the y coordinate. On x coordinate we have to consider the time, while on the y coordinate we have to consider the distance covered by that object. Now there are 2 types of distance time graph for the moving object. Like there are 2 types of motions of object. First is the uniform motion of that object, and second is the non-uniform motion of object. Like first consider the uniform motion of object. A uniform motion. Now we know that in uniform motion the object cover equal distance in equal interval of time. Therefore when we take the readings, here is the time and here is the distance. Now let's consider the time as 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, and so on. And let's consider the distance covered by that object is 2 km in first second. If that object covers 2 km in first second, then in next second it covers 4 km. That is उसने पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड, प्लस नेक्स्ट वाले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करने वाला है वो 2 सेकंड. 2 + 2 क्या होगा? 4 सेकंड. After third second the object covers distance 6 km, and after 4 second the object covers distance 8 km.
Now we have to represent all these values on the graph paper. Let's consider here time 1 second, 2 second, 3 second and 4 second, and here is the distance 2 kilometer, 4 kilometer, 6 kilometer, 8 kilometer. Now when we plot these points on the graph paper, here the time is 1 second. For 1 second the distance covered is 2 kilometer. This is the first point. Then second point, the time is 2 seconds. The distance covered is 4 kilometer. Then the time is 3 seconds. Distance covered by object is 6 kilometer. And the time is for time 4 seconds. The distance covered by object is 8 kilometer. Now when we join all these points, we will get a straight line passing through the object. Therefore, for the distance time graph of the moving object, for uniform motion of object, the distance time graph is straight line passing through the origin. Now next we are going to draw a graph for non-uniform motion. Non-uniform motion. Now what is non-uniform motion? Non-uniform motion can be defined as the motion of object in which the object covers unequal distance in equal interval of time. Therefore, for example, let's consider the time as time and the distance. Let's consider time 1 second, 2 second, 3 second and 4 second. Now, let here object cover 2 kilometer distance in first second. Then the object cover 3 kilometer distance in second second. In third second it covers a 4 kilometer distance. In fourth second it covers a 5 kilometer distance. Then in that case, that is the motion of object is accelerated motion. Its velocity going on increasing. For example, when we start our vehicle, अगर हमने हमारी बाइक चालू की और उसके बाद जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो इनिशियली इन 1 सेकंड इट कवर्स लेस डिस्टेंस, बट नेक्स्ट सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. आफ्टर दैट इट कवर्स मोर डिस्टेंस. जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वो कवर करने वाला डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा. सिमिलरली इन फर्स्ट सेकंड इट कवर्स 2 किलोमीटर डिस्टेंस. इन सेकंड इट कवर्स दिस 2 किलोमीटर प्लस दूसरे सेकंड में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाला है. मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना होगा 5 किलोमीटर. नाउ इन थर्ड सेकंड इट कवर्स अ 4 किलोमीटर डिस्टेंस प्लस पहले वाला 5 किलोमीटर डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है हमारा यहाँ पे 9 किलोमीटर. इन फोर्थ सेकंड इट कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस. यहाँ पे 2 किलोमीटर कवर करने वाला है ऑब्जेक्ट. 3, 4 एंड 5. चौथे सेकंड में वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा और पहले उसने कवर किया वो डिस्टेंस 9 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा उसका 14 किलोमीटर. 14 kilometer. Therefore, as time increases, the distance covered by object goes on increasing. That is non-uniform motion. In that case, when we plot these values on the graph paper, here time axis and here is the distance axis. Now, in that case, when we plot these values on the graph paper, we get an increasing curve like this. That is, initially the distance covered by object is small, but as time passes, the distance covered by object goes on increasing. Now, this type of graph is known as exponential increasing graph. This is the distance time graph for moving object in non-uniform motion. Now, next we are going to study the velocity time graph or speed time graph. Similarly, as we studied the distance time graph for uniform motion and non-uniform motion, we are going to study the speed time graph for uniform and non-uniform motion. Let's consider first uniform motion. Uniform motion. In uniform motion, the object covers equal distance in equal interval of time. That is, its velocity remains same from initial and final point. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसलिए
फर्स्ट सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही डिस्टेंस वो सेकंड सेकंड में कवर कर रहा है, उतना ही डिस्टेंस वो थर्ड सेकंड में कवर कर रहा है. दैट इज इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम. देन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वी गेट let the time is on x axis and on y axis there is a speed of object or velocity of object. Then if our object is moving with velocity of 40 km per hour, उसकी यहाँ पे 20 km per hour, 40 km per hour, 60 km per hour, time 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Now if our object is moving with velocity 40 km per hour, in first second its velocity is 40 km per hour, in next second its velocity is 40 km per hour, in third second its velocity remains 40 km per hour. Therefore the nature of a graph is a horizontal line which is parallel to the x-axis. This is the graph of speed time graph or velocity time graph for uniform motion. As time passes, its velocity or speed of object always remains constant. Then the next type of motion is non-uniform motion. Non-uniform motion. In non-uniform motion, the object cover unequal distance in equal interval of time. पहले सेकंड में अगर वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दूसरे सेकंड में वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, चौथे से तीसरे सेकंड में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा. नाउ व्हेन इट इज पॉसिबल, कब ऑब्जेक्ट ऐसा डिस्टेंस कवर कर सकता है? जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. एज टाइम पासेस इट कवर मोर डिस्टेंस. Therefore we can say that in non-uniform motion the velocity of object goes on increasing. Initial velocity उसकी कम होगी, final velocity क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी. Now when we plot the speed versus time or velocity versus time, now if there is increase in velocity, यहाँ पे हम टाइम लेंगे x axis पे और यहाँ पे speed of object or velocity of object. Let's consider the initial velocity of object is zero. शुरू में ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट कंडीशन में था. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट आवर बाइक और व्हीकल, अगर हमने व्हीकल स्टार्ट की तो इनिशियली व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0. नाउ व्हेन वी एक्सेलरेट द व्हीकल को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है. एज टाइम पासेस इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. इन दैट केस द नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस, इंक्रीजिंग लाइन. दैट इज एज टाइम पासेस इनिशियली यहाँ पे 1 सेकंड थे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी? यहाँ पे इतनी थी. सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हुई? यहाँ पे हुई. मतलब एज टाइम पासेस इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. नाउ हियर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. तो उस टाइप की मोशन के लिए हम क्या बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहां पे क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है. इफ देयर इज increase in velocity, then we can say that there is acceleration produced in that object. Now this is accelerated motion or acceleration produced in that object. In that case the nature of graph is increasing straight line. but यहाँ पे acceleration जो है वो कैसा है? यहाँ पे uniform increasing velocity, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग हो रही है. नाउ इन अनदर केस क्या हो सकता है? और इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो सकती है? डिक्रीज भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू स्टॉप आवर व्हीकल देन वी अप्लाई अ ब्रेक्स. अगर हमने ब्रेक्स अप्लाई किए तो क्या होती है? वहां पे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी. एज टाइम पासेस इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड फाइनली इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. इन दैट केस द नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस. एक्स एक्सिस पे हम एज यूजुअली टाइम लेंगे यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड. नाउ यहाँ पे हम क्या लेंगे? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हम कौन से केस कंसीडर करने वाले हैं? हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम. इनिशियली हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम. नाउ व्हेन वी अप्लाई ब्रेक इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका स्पीड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. देयरफॉर इन दैट केस द नेचर ऑफ ग्राफ इज लाइक दिस, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन. This is increasing straight line. Now this type of motion is called as accelerated motion.
This type of motion is called as deaccelerated motion. Deacceleration or deaccelerated motion. Here is decrease in velocity, here is increase in velocity of the object. Now, if we consider the combined motion of object, for example, let's consider again and same example when we start our vehicle. In that case, initially the velocity of object is 0. As time passes, its velocity goes on increasing. After some time, the velocity of object remains constant, and when we want to stop, then we apply a brake. In that case, its velocity goes on decreasing. In that case, the nature of graph is, let's consider, here is a time axis, and here is a speed axis or velocity axis. Now, let's consider example when we start our vehicle. जब हम अपनी गाड़ी चालू करते हैं तो क्या होता है? Initially its speed is 0. 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, and 6 second. Now, initially the speed of object is 0 or speed of vehicle is 0. As time passes, its speed goes on increasing. यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, हमारे व्हीकल का स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. In 2 seconds, the speed of object is like this. For example, 40 km per hour. Now, after that, जब हम एक मैक्सिमम स्पीड अटेन करते हैं तो क्या होता है? उसके बाद उस व्हीकल का स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. नाउ दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नाउ दिस पोर्शन represent the uniform motion, that is the velocity of object remains same or velocity of object remains constant up to the 5th second. 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है अभी यहाँ पे कांस्टेंट है. और उसके बाद जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? इन 1 second its velocity goes on decreasing. Now here is the acceleration. यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा. यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा डी एक्सेलरेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेशन हो रहा है. Now this is the combined type of motion. It represents combined type of motion. Now during this motion, the distance covered by that object, we can calculate the distance covered by that object from the speed time graph or velocity time graph. Now the total distance covered by that object during this motion is nothing but the area under this curve. इस कर्व के अंडर में जितना एरिया आएगा उतना एरिया क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया हुआ क्या होगा? डिस्टेंस होगा. टोटल डिस्टेंस इन दैट केस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? लेट्स कंसीडर दिस इज ओ पोजीशन. हियर इज द ए, हियर इज द बी, हियर इज सी, डी एंड ई. नाउ इन दैट केस how we can find out the area of this curve? For that, let's consider this is a triangular shape. Now this is rectangular shape, and again this BDC is again a triangle. Then the total area under this curve is equal to area of this triangle OEA. Area of triangle OEA plus area of rectangle AEDB. Area of rectangle AEDB plus again area of this triangle BDC. Area of triangle BDC. When we find this total area, now this total area is nothing but the distance covered by that object. The next type of graph in which if the speed of object, initial speed of object is not equal to 0. In that case, how we can represent it? For example, let's consider here is the time and here is the speed of object. But in some cases, the speed of object, initial speed of object is not equal to 0. For example, if time is equal to 0, the speed of object is 20 km per hour. Initial speed is 20 km per hour. Then in that case, the graph starts from this point, and as time increases, its velocity goes on increasing. This is the nature of graph for increasing velocity of object, non-uniform motion of object, but the initial speed of object is not equal to 0.